A very good evening to all of you. My name is Nitika Bansal, working as an assistant professor in Chandigarh Polytechnic College in CSC department. So today in this lecture, I am going to discuss with you all introduction to multimedia and its evolution. That means its history. So let us start. First of all, here you can see the table of content that we are going to discuss in this video, that are multimedia, media, multimedia applications, multimedia system, components of multimedia and history of multimedia, right? So first of all, what is multimedia? Multimedia is composed of two terms, that is multi and media. Multi means multiple, many or numerous, and media means medium, middle, center, or you can say agent, that is used to make the multimedia, right? That is used to represent the information or data. So what multimedia is? Multimedia is multi plus media, that means which is a combination of multiple medias, right? So here we have the definitions of multimedia. We have number of definitions for multimedia, and at the end each definition means the same. That means multimedia is used to represent the information through audio, video, images, animations, graphics, all these things. Multimedia is basically the combination of different type of medias. And what are the medias? Medias are your text, audio, video, images, and animations. Multimedia is combination of all these medias, right? This is what multimedia is. Next is media. What the media means? As I told you in the last slide, media means the agent, that can be your text, audio, video, images, all these things. We characterize the media in 5 different categories, like perception media, representation media, presentation media, storage media, and transmission media. These are 5 categories of media, correct? First of all, what is perception media? Perception media means how do we humans perceive the information. That means कि हम लोग information को किस तरह से समझते हैं, किस तरह से उसे perceive करते हैं. We perceive the information from what we see and what we hear. हम इंफॉर्मेशन को परसीव करते हैं, समझते हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, जो हमें सुनाई दे रहा है उस चीज से. What we see means visual media, right? That is text, graphics, images, videos. And what we hear means audio media, that is your music, sounds, and voice. This is perception media, how we perceive the information. That means how we humans understand the media, correct? There are two perception medias, you can say, visual media and auditory media. Visual media means what we see, and auditory media means what we hear, like music, sound, or voice. Correct. Next is your representation media. Representation media means कि how the information is stored or represented in the computer system. कि हम अपनी information को जो भी आपके पास available है, either it is text, audio, video or images, whatever it is, आप इसको computers में किस तरह से represent करते हो. Like you store the text or you represent that text into the computer system in form of ASCII codes. Correct. What are ASCII codes? They are American Standard Code for Information Interchange. In most of the computer systems, जो आपका text होता है, text data, वो ASCII codes की form में ही store होता है. Like audio data को represent करने के लिए आपके पास different formats हैं. Images को आपको represent करने के लिए भी different formats हैं, like JPEG format, JPG format, bitmap format. Number of formats are there to represent the media in computer system. Videos को represent करने के लिए हमारे पास काफी सारे formats हैं, like MPEG, MP4. Many formats are there to represent the media in computer system. So what is representation media? Representation media means how we represent the information in the computer, or how an information is encoded into the computer system. Correct. Representation media, how to represent the information in computer system. Correct. Next is your presentation media. Presentation media means कि which medium you will use to present the information in front of others. मतलब आपको computer system से जो भी information मिल रही है,
either in text form or in audio or video or whatever it is, उसको आप दूसरों के सामने किस तरह से present करोगे, right? For that we use output devices. We all know about output devices, which are used to present the information in front of others. And what are those output devices will be? Output devices can be your monitors, that is your screen, printers or plotters. Or you can say paper is also an output device which is used to present the media, because on a paper there are text, there is images, all right, and multimedia is combination of any of these media. So paper is also a kind of multimedia, करेक्ट. तो हम अपनी इंफॉर्मेशन को पेपर पे भी दूसरों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं. तो प्रेजेंटेशन मीडिया क्या हुआ कि हम किस तरह से अपनी आउटपुट इंफॉर्मेशन को दूसरों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, करेक्ट. एंड टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ अदर्स वी यूज सम आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर्स, प्रिंटर्स, प्लॉटर्स और योर पेपर, करेक्ट. नेक्स्ट इज योर स्टोरेज मीडिया. स्टोरेज मीडिया एज द नेम सेज इट इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन, कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ पे स्टोर हो रही है. तो स्टोर करने के लिए आपके पास नंबर ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस हैं, लाइक योर हार्ड डिस्क, सीडीज, डीवीडीज, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑल दीज थिंग्स आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा इनटू द कंप्यूटर सिस्टम. एक हमारे पास था रिप्रेजेंटेशन मीडिया. रिप्रेजेंटेशन मीडिया था कि आप इंफॉर्मेशन को कैसे, किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, किस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक. और स्टोरेज मीडिया है कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर सिस्टम में कैसे स्टोर कर रहे हो, कहाँ पे स्टोर कर रहे हो. स्टोरेज के लिए काफी सारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, लाइक योर हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क, सीडीज, डीवीडीज, पेन ड्राइव्स. Number of storage devices are available in the markets to store the information, correct. And information here we means is multimedia information, okay. Next is your transmission media. Transmission media means कि how we transmit the information. Information को transmit करने के लिए हम क्या use करते हैं, ठीक है. There are two kind of mediums to transmit the information. It can be wired or it can be wireless. Wired means we use number of cables like coaxial cable, optical fiber cables and twisted pair cables. Number of cables are available in the market जिसके थ्रू आप लोग अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू another place. And second one is your wireless media. Wireless media means like your phones, you transmit the information through your phones, and for that we use satellites, correct. In phone you have like Bluetooth, you have emails, you have number of things in wireless category to transmit the information from one point to another point. So transmission media means ki how we transmit the information from one place to another, or which medium we use to transmit the information. Medium here can be wired or wireless, correct. So these were your categories of media. What were those? Perception media, representation media, presentation, storage and transmission media, correct. Next is your definition of multimedia application. It's just a definition, but it is very important definition. Multimedia application, it is an application which use a combination of multiple media sources. Means multiple media से मिलके जो आपकी application बनती है, that is your multimedia application. And what are medias? Again I repeat, text, images, audio, video, graphics, all these things. And by combining these multiple media sources, the application which developed is known as multimedia application. You can take an example of multimedia application, that is World Wide Web. What is World Wide Web? You all know, you all run internet. There are number of web pages, and on each web page there is text, audios, videos, images, everything is there. So what World Wide Web is? It is an application of multimedia, and your games and number of applications are there. So what is multimedia application? The application which is developed by combining number of media sources, correct. Next is your multimedia system. What multimedia system is? Multimedia system is just a system which process your multimedia information. मतलब जो सिस्टम आप लोग मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस को रन करने के लिए या उनको यूज करने के लिए यूज करते हो, दैट इज योर मल्टीमीडिया सिस्टम. फॉर एग्जांपल, इन टुडेज टाइम
every computer system or laptop or your phones is a multimedia system, because in all these systems you can run your multimedia applications. You use World Wide Web in all these things. You use games. You use number of applications which are multimedia application in these. So multimedia system is what? Which process, store, generate, and manipulate the multimedia application or information. Multimedia system is a system which process the multimedia data or you can say information. मल्टीमीडिया सिस्टम का एग्जांपल की अगर हम बात करें तो इट कैन बी योर कंप्यूटर सिस्टम, योर लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, ऑल दीज थिंग्स इन टुडेज जनरेशन. Not in past generation, but in today's generation, every system that you have, laptop, computers, even your TV, your phones, all these are multimedia system, because in all these systems you can run multimedia applications, right? Next is your components of multimedia system. There are number of components of multimedia system which are required for any multimedia system, like capturing devices which are used to capture the multimedia, like your video cameras, video recorders, mics, tablets, keyboards, all these are capturing devices. Second one, storage devices you will require, obviously. That will be your hard disk, CDs, CD-ROMs, DVD-ROMs, pen drives, all these things. Communication network, these are also necessary to transmit the multimedia data. And what it will be your internet, intranet, local area network, or any other high speed network it can be. Correct. Next one is computer system. Obviously, you will require a computer system to run any multimedia system. So it can be any desktop machine or workstation. Next is display devices. As I said कि आउटपुट को आप कैसे प्रेजेंट करोगे दूसरों के सामने, उसके लिए आपको डिस्प्ले डिवाइसेस भी चाहिए. So it can be your TV monitors, color printers, or plotters. So these are the main components of multimedia system: capturing devices, storage devices, communication devices, computer systems, and display devices. Right? This is about components of multimedia system. Next, we will go with the history of multimedia. History hai, so obviously it will be a theoretical and cramming part of multimedia. So I will introduce you the history of multimedia in brief. Obviously everyone know कि multimedia ने computers की generation को कितना change कर दिया. Starting में जो आपके पास computers आए थे, they were single purpose machines. ठीक है, उनके थ्रू आप सिर्फ कुछ complex mathematical problems को ही solve कर सकते थे. ठीक, but during 1960s mainframe computers use हुए, उनके थ्रू आप databases को store कर सकते थे, financial system की तरह वो work करते थे. 1970s में आपके पास थोड़े एडवांस कंप्यूटर सिस्टम आए जो आप ऑर्गेनाइजेशंस में यूज करने लगे इंफॉर्मेशन को पब्लिश करने के लिए या मैनेज करने के लिए, राइट. 1980s में और एडवांस कंप्यूटर सिस्टम्स आए जो आप घर में भी यूज करते हो, जिसको आप अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर्स बोलते हो, जिसके थ्रू आप अपने डेटा को प्रोसेस करने लगे, वर्ड शीट्स यूज बनाने लगे, और इवन गेम्स भी उनमें अवेलेबल थी. ठीक है, बट इन मिड ऑफ 1980s एंड 1990s टेक्नोलॉजी और ज्यादा एडवांस होगी और आपके पास और फास्टेस्ट डेस्कटॉप कंप्यूटर्स अवेलेबल थे जिसके अंदर कैपेसिटी भी ज्यादा थी. ठीक है, और उनकी काम करने की स्पीड भी अच्छी थी, उस पर आप डिजिटल ऑडियो वीडियो पे भी वर्क कर सकते थे. तो इस तरह से जैसे जैसे आपके ईयर्स बढ़ते रहे आपके कंप्यूटर सिस्टम में एडवांसमेंट आती रही और उसके साथ साथ ही आपका मल्टीमीडिया भी इवॉल्व होता चला गया, राइट. Here are some years और उसके साथ हमने बताया कि किस ईयर में क्या चीज आपकी आई है. It is related to the history of multimedia. For example, जो आपकी सबसे पहली मल्टीमीडिया गेम आई थी, The Game of Pong, that was developed in 1972. As you can see it on the screen, it was written over there. In 1980s आपका माउस इन्वेंट हुआ by Xerox Corporation. 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और IBM ने अपने PCs इन्वेंट किए. उसके बाद आपके पास 1986 में फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एनसाइक्लोपीडिया जिसपे आपने फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई ऑन मल्टीमीडिया. 1986 में सबसे पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी ऑन मल्टीमीडिया जिसको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी बोलते हो. ठीक है जी, एंड मेनी अदर एग्जांपल्स आर ओवर देयर. नेक्स्ट, जो आपका अडोब फोटोशॉप है विच इज यूज्ड टू प्रोसेस द इमेजेस, जिसके थ्रू आप इमेजेस पे हर तरह का काम कर सकते हो. इमेजेस को रीस्टोर कर सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो, उनकी शेप्स को, कलर्स को चेंज कर सकते हो. यू कैन डू मैनी मोर इन फोटोशॉप फॉर योर फोटोज. फोटोशॉप इज अ इमेज प्रोसेसिंग टूल. उसमें आप इमेजेस से रिलेटेड
कुछ भी टास्क परफॉर्म कर सकते हो. तो दैट फोटोशॉप वाज इन्वेंटेड इन 1990s बाय अडोब. उसके बाद 1990s में ही आपकी विंडोज 3.0 मल्टीमीडिया आई बाय माइक्रोसॉफ्ट. देन आपके पास 1993 में आने शुरू हुए और एडवांस ब्राउजर्स लाइक मोजेक. फिर 94 में आया नेटस्केप. फिर 1995 से आपके ये वेब ब्राउजर्स और ज्यादा मतलब एडवांस होते चले गए. देन ओपेरा आया, गूगल क्रोम, नंबर ऑफ वेब ब्राउजर्स आर देयर. और 1995 के बाद ही आपके पास आपके और ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी मार्केट में आए लाइक विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज 2000. और अब तो इतनी सारी अवेलेबल हैं कि सबके नाम याद रखने भी थोड़े मुश्किल है. विंडोज 7, 8, 9, 10, विंडो विस्टा. नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अवेलेबल इन द मार्केट and number of multimedia applications or softwares are also available there. Correct. So this was all about the history of multimedia. Next, there are some applications of multimedia. Like as I told you in the last slides, the World Wide Web is the biggest example of multimedia, which is the combination of many medias, text, audio, video, images, animations, everything is there on your World Wide Web. Right. Hypermedia is there. Hypermedia is like जैसे हमारा हाइपर टेक्स्ट होता है कि आपने एक टेक्स्ट पे क्लिक किया एंड देन यू जंप टू द नेक्स्ट पेज. जस्ट इन द सेम वे देयर इज हाइपर मीडिया, बट वहां पे टेक्स्ट की जगह पे आपके पास क्या होगा, अदर मीडिया फॉर्मेट्स. Right. Then there is an another example of multimedia application, video on demand. You demand for a video and you get it. Right. There is interactive TV, computer games, virtual reality, digital video editing, multimedia database system, and many other applications are there in multimedia. So this was all about for today's lecture. Multimedia, its history, its applications, all these things we discussed in this chapter. And we'll go for the next topic in the next lecture. Thank you.